today we are going to learn basics of generic programming. Actually, we are going to switch to the collections java.util package. To understand collection, we require to understand generic programming. Suppose that we are writing one class. Okay. Name of the class is going to be a box. एक box नाम का हम class लिख रहे हैं. So for that we are going to use an Eclipse one. प्रकृति बेटा आप हमेशा लेट क्यों होती हो? और you are not a part of. सर मुझे लिंक आता है तब मैं ज्वाइन कर पाती हूँ सर. टीम से मेरा वो आईडी पासवर्ड वो एक्सपायर हो गया है. अरे तो बोल देते ना, हमने पासवर्ड रिसेट करवा के लिए ना कुछ स्टूडेंट के. सर मैम को बोला है मैंने. मैम बोली है कि और बच्चों का आएगा तभी वो करेंगी. हाँ तो ग्रुप में आना चाहिए ना. अभी 5-6 दिन पहले सेमेस्टर 3 का और सेमेस्टर 1 का कुछ आया था थोड़े स्टूडेंट का, तो करवा के ले लिए बेटा. यस सर. सर मेरा भी 2 दिन पहले हुआ है तो तभी मैं मैम को बोली थी. क्योंकि मैं 2-4 दिन सेशन में मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप वेटिंग लॉबी में आ जाते हो इसलिए. यस सर. सर लिंक आती है तभी मैं ज्वाइन कर पाती हूँ. कोई बात नहीं. Okay, I hope that Eclipse is visible for you. Yes sir. Okay. So we are going to write one class. Okay, for that, before that we are going to create package. Okay, so you can say collections. I say collections dot begin. We are going to change the name. By mistakenly it has come little bit different. We want it has to be begin. So we said that we are interested to design a class box. The box is going to hold some data just like a number holder we had written for our thread. थ्रेड में जो नंबर होल्डर था, एक नंबर होल्डर में हम इंटीजर स्टोर कर रहे थे, वैसा हमें बॉक्स चाहिए. इस बॉक्स में हम कुछ डेटा स्टोर कर सके. Okay, so if you are going to store the integer data type, we are going to have private int, okay, atom, that is atom expected to store into the box. Then we may have getters and setters for the same. So you can create getters and setters for an atom. Okay. And if you want to use the main method for that one, again it is going to be pretty simple. Okay. You say सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है. प्रगति तो बोलिए अभी दिख रहा है. अभी मेरे को नहीं दिख रहा है सर. सर अभी चला गया. बंद हो गया सर. बंद हो गया क्या? ठीक है. यस सर. So we have written a class box, okay, with only one atom of type int. We are having the two methods, get atom and set atom. Get atom is used to get the value of an atom which is stored into the box. Set atom is the method which is used to get the set atom is used to set the value of an atom in the box one. Simple as straightforward and nothing difficult as such. Then we are going to write a main method too. So we are going to write box main. Obviously we require public static void main. So we are going to do that. Public static void main. And main is expected to take the string parameters.
which is expected to be an array. If you want to create the box, you can create box B is equal to new box. Then you can write B dot set or put whatever that one. Okay. And you are going to store 12 here. And you can get back atom equal to B dot get atom. And then you can print the values of that by using system.out.println atom is atom. Okay. So execute किया, ये output आया. I hope that there is not at all any problem as such. कुछ भी problem नहीं है समझने में. बराबर है? अकर, चप्पू, हर्ष नो सर। नहीं है. अभी मुझे बताओ. नो सर। हाँ, मैंने तो ये बॉक्स बनाया था इंटीजर के लिए बनाया था. अगर मुझे फ्लोट के लिए बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I require to write one more float box with some different name. For example, blocks for float. Then I have to change this particular int to the float. Then this is going to be changed to the float. Of course, this is going to change to the float. Is it like that, no? अगर मुझे फ्लोट डेटा इसमें रखना है तो मुझे फ्लोट डेटा के लिए और एक बॉक्स बनाना पड़ेगा. So there is a concept of generic programming in Java. There you can do something like this. Just also here you can say T atom. Here you can say T. Here also you can take T and work is over. Just observe carefully. क्या किया हमने? We had just बॉक्स पे एक टेम्पलेट डिफाइन कर दिया. ऊपर टेम्पलेट डिफाइन कर दिया और बॉक्स के जो क्लास लिखते थे हम, क्लास के आगे हमने एंगुलर ब्रैकेट में एक T करके कुछ पैरामीटर स्पेसिफाई किया. That parameter we are using for declaring a variable, for return type, and for setting a value. If you do like that one, now we'll come back to the box B. Okay. Now here you can say box, and then you can pass a parameter integer. Obviously, here also you require to pass an integer, and your code is going to be as pretty as we had written an earlier one. आगे देखो कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ डिक्लेरेशन में चेंज कर दिया. It works fine. So we can say here box, we say it is int box. For that we are changing, renaming. So we say int box. If you want one more box, you can declare box. Now suppose that you want a float or a double. Okay, it depends upon your need. Double, or let us have the float only. Okay, so we can say float box is equal to new float one. Okay. This is going to be new float. Then you can use this float box dot set
with 12.34 and float val is equal to float box dot get item, and then sys out we are going to use val equal to val. Obviously, this line is going to be an error one for the reason that 12.34 is an literal one. It is a float literal. By default, float literals are going to be of type double. We have to convert into the float by using suffix either small f or capital F. Small f भी चलेगा और capital F भी चलेगा. This is what we studied at the time of the data types and type conversion. Okay. रन करो, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा. ठीक है. So one box we had written, that one box we are using for float, one box we are using for double. We can use it for byte, we can use it for short, we can use it for long. Not only that, you can use it for string too. Then you can use string box dot set IMED. Then we can use to retrieve it str is equal to string box dot get item, and we can print it. Okay. str is str. Save it, run it. Of course, you are going to get the expected output. So this is the basics of collection. A collection is the basics. All collections are based upon this particular functionality. This functionality के साथ आपके सब पूरे collections design किए गए हैं. The collections are made so that we can use it for any data type. And this is going to be called as a generic program. इसको generic programming बोलते हैं. You can pass not only the single parameter, you can pass as many parameters as many you want. If you want to put it, you can put it like this. But once you put like this, then here also you're supposed to pass the two parameter, not the single parameter. Because your class is declared to take the two parameters. So you're supposed to pass the two parameters at the time of the declaration of a variable or creating a instance of that particular class. You can check out that as far the box class is concerned, passing the two parameters is not giving an error as such. Only thing is that where we are using that, there we are getting an error because the box class is declared to take the two types, and we are trying to pass the only one type, which is not going to be following the constraint what we are specifying. Any questions? No questions. हेलो सर. Yes. सर जेनरिक सर डिक्लेयर कैसे हुआ सर, एक बार और बता दीजिए. समझ डिक्लेयर्स करने में हमने जो नॉर्मल क्लास बॉक्स डिक्लेयर किया था उसके आगे सिर्फ हमने एंगुलर पैरामीटर में टाइप स्पेसिफाई किया. दैट इज गोइंग टू बी टी यूज्ड फॉर टाइप. ऐसा जरूरी नहीं कि आप टी यूज करें. टी की जगह आप यू कैन यूज like this also.
ये जरूरी नहीं कि T यूज करें, but most of the times we are using the single capital letters which is used by the Java library also. Java library भी ऐसा ही nomenclature use करती है, इसलिए हमने T use किया था. T stands for type, and if you are going to get E stands for element. Okay, like that one. So Okay, sir. इससे क्या पता चलता है कि आप जो लिख रहे हैं क्लास, दिस क्लास वी आर राइटिंग टू होल्ड other data type or to deal with another data type, and that data type can be anything, not a specific one. पहले हमने इंटीजर का बनाया था तो इसमें सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर पाते थे हम. फ्लोट के लिए अलग सा क्लास लिखना पड़ता, डबल के लिए अलग सा क्लास लिखना पड़ता, स्ट्रिंग के लिए अलग सा क्लास लिखना पड़ता, एम्प्लॉय के लिए अलग सा क्लास लिखना पड़ता, स्टूडेंट के लिए अलग सा लिखना पड़ता, बुक के लिए अलग सा लिखना पड़ता. तो कितने क्लास लिखेंगे हम? ये कलेक्शन डेटा होल्ड करता है ना, तो डेटा होल्ड करने के लिए हम कितने क्लास लिखेंगे, which is not going to be a feasible solution. So there is a concept of generic programming. Actually it is taken from the C++ only. In C++ there is a concept of a template. C++ में template का concept है, वहां से pick up किया है, and we are going to implement like this. Okay. Now question comes is that what is the advantage of this? Okay. नॉर्मली पहले था, मतलब जावा जेडीके 1.2 या 1.3 या 1.4 था, तो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ अ जेनेरिक प्रोग्रामिंग. जेनेरिक प्रोग्रामिंग कांसेप्ट कम्स आफ्टर 1.5. जेडीके 1.5 के बाद ये कांसेप्ट आया है, उसके पहले नहीं था. उसके पहले आपको क्या करना पड़ता था? यू सपोज टू डिक्लेयर अ क्लास, फॉर एग्जांपल इंस्टेंस कलेक्शन सी इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ऐसा करना पड़ता था. So we say collection. Here it says the E. I'm removing that, and I'm saying it an array list. I just require to import it. That's it. देखो इसमें कुछ error है क्या? There is no error as such. Okay. But if you are going to put here C dot add, इसमें क्या add कर सकता हूँ मैं? For example, ONE1 string add किया. Then C dot add 2 integer add किया. C dot add 12.34 डबल ऐड किया. तो कलेक्शन हमने डिक्लेयर किया. कलेक्शन में मैं इंटीजर की स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ. आई कैन एबल टू ऐड द इंटीजर आल्सो, एंड आई कैन एबल टू ऐड द double also. So I can add employee also, I can add atom also, I can add book also, I can add anything there. But once you are going to use the collections, you are expected to use the collections for the specific type. Specific type के लिए collection use करना चाहिए, not for the any data type. So is there any possibility that once we are going to declare a variable for a particular data type, we should be able to put only that data type into that collection using a particular variable, and that's why there is a concept of a generic one. Okay. For example, मेरा जो string box है, और string box में यहाँ यूज करता हूँ, और मैं अगर set यूज करता हूँ, और set यूज करके मैं यहाँ tail स्पेसिफाई करूंगा, check out, it is giving an error. Okay, and you can check out what is the error. Method set atom string is a type of box, is not applicable for argument of type int1. ये बोलता है कि string expected है पास करना, आप int पास नहीं कर सकते, जबकि we can use that box to create the बॉक्स ऑफ एनी टाइप. इंटीजर का भी बॉक्स बना सकते हैं, फ्लोट का भी बना सकते हैं, डबल का भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग का भी बना सकते हैं, बुक का भी बना सकते हैं, सर्कल का भी बना सकते हैं, anyone. But still it says that no, you can't put the integer here because it checks what is the declaration. डिक्लेरेशन में आपने क्या स्पेसिफाई किया? अगर डिक्लेरेशन में स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया तो आप स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं. डिक्लेरेशन में अगर फ्लोट है तो आप फ्लोट ही स्टोर कर सकते हैं, और डिक्लेरेशन में अगर कुछ और डेटा टाइप है तो आप वही डेटा टाइप इसमें स्टोर कर सकते हैं, नॉट द एनी अदर टाइप. ओके, एंड दैट यू कैन डू फॉर
कलेक्शंस टू। कलेक्शन के लिए आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको कलेक्शन आपको स्ट्रिंग का चाहिए, ओके, सो यू कैन डिक्लेयर हियर मुझे स्ट्रिंग चाहिए। वंस यू डिक्लेयर दैट, चेक आउट दैट व्हाट हैपेंस हियर। ये दोनों एरर को एरर आया, ओके। मेथड ऐड स्ट्रिंग keys of type collection string is not applicable for the argument of type int1। जैसे ही आपने डिक्लेरेशन चेंज किया, डिक्लेरेशन ये हो गया कि it is giving an error word। So when you are putting the data into the collections, there are the chances that by mistakenly we are going to put some other data type into the collections, and if you are not using the generics, you can put any kind of a data into the collections, and that will create the problem when we are going to retrieve the data from the collection and trying to process it, because if string is stored one, okay, and if you are trying to get data from the box or collection, if you are going to get the circle, how circle can be converted into string? Because circle is not a string, is a relationship है नहीं उसमें, तो वो restriction डालने के लिए, कंपाइल टाइम चेकिंग डालने के लिए जेनेरिक्स इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। वंस यू आर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल ऑफ पर्टिकुलर टाइप, आपको पता है कि ये जो कलेक्शन है मेरा स्ट्रिंग का कलेक्शन है, तो बाय मिस्टेकली आल्सो यू कैन ऐड एनीथिंग एल्स। अगर बाय मिस्टेकली भी आप कुछ ऐड करने की कोशिश करोगे तो इट विल गिव अ कंपाइल टाइम एरर। सो कंपाइल टाइम चेकिंग होगा, एंड वी आर गोइंग टू अवॉइड द रन टाइम प्रॉब्लम्स। रन टाइम में जो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आने के चांसेस है, क्योंकि सर्कल हम अगर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन ही आएगा। या सर्कल वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू बुक, हमें बुक का कलेक्शन चाहिए और उसमें हमने सर्कल रख दिया और जेनरिक हम यूज नहीं करेंगे तो इट इज अलाउड टू पुट देयर, बट इफ यू आर गोइंग टू गेट इट बैक एंड इफ यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू द बुक, सर्कल बुक में कन्वर्ट थोड़ी होगा, इट इज गोइंग टू रेज एन एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्लास कास्ट एक्सेप्शन होने के चांसेस है, बट हमने अगर जेनरिक्स यूज किया, वेरिएबल प्रॉपर्ली डिक्लेयर किए, तो देयर इज चांसेस दैट, और देयर इज नो चांसेस दैट वी आर गोइंग टू गेट रन टाइम एरर। रन टाइम एरर आने के चांसेस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। रिमेंबर, आएगा ही नहीं ऐसा नहीं है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, बट इट इज गोइंग टू कम डाउन, वो नीचे आएगा। ओके, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द जेनरिक वन। एनी क्वेश्चंस? नो सर। मतलब सर ये बेसिक टेम्पलेट की तरह ही है ना, जैसा C++ में होता है। Yes, yes, yes. It is as good as a template. Okay, it is as good as a template. वो सिर्फ उतने उसमें सिर्फ टेम्पलेट कीवर्ड यूज होता था, यहाँ टेम्पलेट कीवर्ड यूज नहीं होता है, दैट्स ऑल। ओके सर। वहाँ टेम्पलेट क्लास लिखते थे ना, यहाँ यस सर। हाँ, यहाँ लिखते नहीं है, डायरेक्टली आप स्पेसिफाई कर सकते हैं पैरामीटर, जस्ट लाइक व्हाट वी स्पेसिफाइड हियर। ठीक है, we have written the program for using the collections, जहां हमने डिफरेंट थ्रेड में हमने कुछ किया था, ज्वाइन में। Okay, we are used the thread. One thread is using creating sometime random numbers and putting into the collection में put कर रहा था, और हमने मेन मेथड में दो थ्रेड्स बनाए थे, दोनों थ्रेड्स डिफरेंटली वर्किंग टुगेदर, और बाद में एलिमेंट हमने प्रिंट किए थे। ऑब्वियसली मैंने सॉर्टिंग के बारे में बोला था, लेकिन सॉर्ट किया नहीं था। अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप सॉर्ट कर सकते हो, ओके, इफ रिक्वायर्ड। There is a class called collections, not remember. Let us check. We will check out. Okay. So what is the name of the collection? Data dot
Just wait. I will Google for it. I'm not. There is one method called an arrays, but I have to check that whether arrays are going to use to sort or not. So I'm using how to sort collection in Java. Again, it is taking me to Java 2 points. ओके कलेक्शंस के साथ कलेक्शन के साथ नहीं कलेक्शंस नाम का एक मेथड है क्लास है उसमें स्टैटिक मेथड है सो हियर कलेक्शंस डॉट आप सॉर्ट यूज कर सकते हो यू कैन पास हियर डेटा okay, it says that sort is applicable for type of an integer only. It is not applicable for the integer ही है ना not applicable for the arguments of type collection integer. Okay. So array list is going to be there. Sort an array list. I'm changing these to array list. Okay. Collection के लिए applicable नहीं था. It is applicable for the list type. We are going to see the hierarchy for these collections in Java. Class की एक hierarchy है. And जब ये sort method define किए तो sort method is expected to take the parameter of type list. इसमें list का type चाहिए. And collections is not a list one. Array list is a list one. Okay, we are going to see that when we are learning the class hierarchy. And if you are going to run this, definitely it is going to be now sorted. आपको ये sorted ही मिलेगा. Check out. Okay. So just we had come to this particular program to discuss about that. Yesterday also we had used the collection from java.util and there also we are using the generics one. वहाँ भी हम generics use कर रहे थे. यहाँ हमने integer declare किया. I hope that now yesterday's any confusions or queries can be resolved here only. आपको यही समझ में आएगा कि yesterday में हमने ये क्या किया था. So we had used the generic programming yesterday. Now the question comes is that I had declared an array list here, but when I'm creating the box is creating the random collection, it is expected to be of collection one. A list is a collection because list is an interface which extends the collection interface. Next interface है जो collection interface extend करता है. So list is a collection one. So it is okay if you are going to pass the list in place of a collection. जहाँ collection चाहिए वहाँ अगर हम list pass कर सकते हैं. For example यहाँ ये जो हमने पास किया था thread का object बनाते समय random collection का object. So you can pass their data which is going to be of type list and list is a collection. It is an acceptable. There is no problem. ऐसा कुछ problem उसमें है नहीं. So this is one more example of generic we had used yesterday. Yesterday हमने इसको use किया था. Any questions?
So if you are having any questions, you can ask one, because only 5 minutes are remaining to end the sessions. I would like to take your questions only. As for the collections, class hierarchy, and all that stuff, we are going to study tomorrow. Otherwise, I can cover. That is not issue. Okay. आपके कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. Whether all of you are there? Yes, sir. Okay, questions not expected to be of Sir. collections या और कुछ इधर उधर का क्वेश्चन भी है तो आप पूछ सकते हैं. पूछिए सर बेटा. एरे और कलेक्शन में डिफरेंस क्या है? बेटा अरे आपको स्पेसिफिक टाइप का डिक्लेयर करना पड़ता है, बराबर. यस. एक बार फिर फॉर एग्जांपल मैंने डिक्लेयर कर दिया int या इंटीजर. ओके, इंटीजर नाम इज इक्वल टू न्यू इंटीजर करना पड़ेगा ना. एंड देन आई सपोज टू स्पेसिफाई द साइज. ये अरे है आपका. हाउ मेनी एलिमेंट यू कैन स्टोर दिस इनटू दिस? 10. What happens if there are the 11 elements? Not possible to store. हाँ, बराबर है. Collections allow you to extend your underlying data structure. जो data structure ही है ना, array is the data structure, list is the data structure, set is the data structure, map is the data structure. ये सब data structure ही है. तो collection library आपको ऐसे collections provide करती है कि जो dynamically, automatically grow हो सकती है. This is one case. Then, okay, this is for a creation. Okay. What about searching? Searching जो है, you require to write a code for that. Obvious? Yes, sir. Okay. Once we write the code one, there is no guarantee that it is going to be a efficient code. क्योंकि मुझे जो algorithm पता है searching के लिए मैं वो use करूंगा. आपको जो पता है वो आप use करेंगे. हो सकता है आप more than one variable, मतलब जितने variable use करने चाहिए उससे ज्यादा variable use करेंगे. And complexity is going to, or the efficiency is going to be comes down. But in Java collection, searching mechanism is one of the mechanism is searching mechanism is applicable with the proper efficiency. अगर element delete किया जाता है कोई, then you require to change your underlying collection. For example, array में 10 element है, 10 element की जगह 5th element हमने remove कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा हमें? We require to सर पूरा एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा सर बाकी नंबर को शिफ्ट करने के लिए आगे. shift करने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. मतलब 6th has to put into the place of 5, 7th Yes, has sir. to be pushed into the 7 and like that one. तो हमें ये सब लिखना पड़ेगा. लेकिन कलेक्शंस में आपको इतनी जगह करने की जरूरत नहीं है. कलेक्शन इज इंप्लीमेंटिंग दैट मैकेनिज्म टू हाउ टू ऐड द एलिमेंट इनटू द कलेक्शन एंड हाउ टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन. मतलब सर डायनेमिकली हम चेंज कर सकते हैं कलेक्शन में. यस यस, डायनामिकली आप रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ओके, स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको लिस्ट है तो लिस्ट में अगर स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको ऐड करना है तो स्पेसिफिक पोजीशन को ऐड कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द ऑल फीचर्स आर collections are implemented with basic functionality to add elements, remove elements, searching element with an efficient coding. So it is better to use collection whenever there is need to use any mechanism to store a data
एज अ कलेक्शन जैसे आपको एलिमेंट शो करना है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज द कलेक्शन, ओके, अगर ऑटोमेटिकली ग्रो करना है तो ऑब्वियसली arrays are there, but use an array if there are going to be less number of elements and there is a no chances to grow that particular array when it is required one. अगर array हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, नया array बनाना पड़ेगा, पहले array के एलिमेंट दूसरे में कॉपी करने पड़ेंगे. Yes. So to remove that hassles, collections are there. So collection is a data set of data structures. Data structure के कुछ classes और कुछ functions है जो collections Java detail package में है. Next class में हम PPT देखने वाले हैं after your test. तो सर एरे और कलेक्शन में कोई सिमिलर नहीं है क्या दोनों? सिमिलरिटी? नहीं, सिमिलरिटी सिर्फ इतनी ही है कि both can hold the data. That's all. Nothing more than that. But there is lot of differences. Once you are going to declare an array, it cannot be grow. If you are going to remove or add element, you require to take the precautions where you are going to add an atom or from where you are going to delete an atom. जब delete कर रहे हो या कोई add कर रहे हो तो you require to take the precautions for that. Collection में you need not have to be worried about that one. Java already implemented that. You have to just use it. That's all. तो आसान है ना, प्रोग्रामर के लिए आसान है ना. प्रोग्रामर नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाउ टू इंप्लीमेंट अ डेटा स्ट्रक्चर. प्रोग्रामर हैज टू यूज डेटा स्ट्रक्चर, दैट्स ऑल. और ये वेल प्रूवन है तो यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट इट काम कैसे करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये लाइब्रेरी मैंने बनाई है और आपको यूज करनी है तो यू माइट बी हैविंग वन क्वेश्चन, सर ने बनाई तो है लेकिन क्या ये इफिशिएंटली काम करेगी? ऐसा कोई सवाल यहाँ नहीं आएगा. ओके. ओके.